Hello students, today we are going to discuss the exercise 2.3 from the chapter fraction and decimals. So first question is 1 by 4 of, first part is 1 upon 4, B is 3 upon 5 and C is 4 upon 3. So हमें 1 upon 4 इन तीनों पार्ट के find out करने हैं. So I am doing some of the questions from this exercise and remaining question you have to do by yourself by following the same method I am applying on the questions. So find first part. So I am doing A, 1 upon 4 of 1 upon 4. We have discussed earlier that of means multiplication. So 1 upon 4 into 1 upon 4 और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1, 1 इंटू 1. डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 4 4 16. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर ए. नाउ बी, 1 upon 4 of 3 upon 5. So 1 upon 4 of ka means multiply and 3 upon 5. And this will give us by multiplication 1 into 3 is 3 and 4 into 5 is 20. Okay, so 3 upon 20. Third C part we have is 1 upon 4 of 4 upon 3. So this will give us 1 upon 4 into 4 upon 3. 1 into 4 is 4 and 4 into 3 is 12. Okay, and since we can see here that 4 can cancel out 12, so 4 3 times 12, so 4 ones are 4, 4 3s are 12, so 1 upon 3. So this is how we do multiplication when we have given of instead of a sign of multiplication. Okay, second question is multiply and reduce to lowest form if possible. So हमें multiply करना है given numbers का, given fractions का, और उनको lowest form में लिखना है अगर possible है तो. ओके, so 2 upon 3 into 2 and 2 upon 3. so 2 upon 3 को हम पहले simple fraction में लिखेंगे that is improper fraction. so 3 2 जा 6 plus 2 that is 8 upon 3. so by multiplying we have 2 8s are 16 and 3 3s are 9. Now since the question was in mixed fraction, so we have to reduce this fraction in mixed fraction, or we can say that in lowest form. So by dividing 16 from 9 we will have mixed fraction as 1 7 upon 9, or we can read it out as 1 whole 7 upon 9. So this is our answer. Third part of this question is 3 upon 8 into 6 upon 4. So 3 upon 8 multiply 6 upon 4. So let's multiply 3 6 are 18 and 8 4s are 32. Now we can see that the numerator and the denominator we have even numbers. So obviously 2 can cancel out these both. So 2 9s are 18 and 2 16s are 32. So 9 upon 16. This is our simplest fraction or lowest fraction of these multiplication. Okay, now let's come to the question number 3. Multiply the following fraction. Similarly as we were doing before, let's convert this mixed fraction in improper fraction. So this is 6 2 upon 5 multiplied by 7 upon 9, and this will reduce to 5 6 are 30 plus 2 32 upon 5 into 7 upon 9. Now by multiplying we have 224 upon 5 9s are 45, and since we have quotient in mixed fraction, so we have to convert this fraction into mixed fraction, and by converting we have 4 whole 44 upon 45. So this is our answer. Now the sixth part of this question is 2 whole 3 upon 5 into 3. So let's convert this mixed fraction in improper fraction. 5 to just 10 plus 3 is 13 upon 5 into 3. Now as we know that if there is a whole number, we can multiply it by simply putting 1 below 3
as a denominator, or we can simply multiply 13 into 3 and let 5 be 5. Okay, so 13 3 is a 39 and 5 ones are 5. Okay, so when we convert this in mixed fraction, we will have 7 4 upon 5. Okay, so this is our answer. Now question number 4 is which is greater. हमें बताना है कौन सा greater है, 2/7 of 3/4 और 3/5 of 5/8. तो हमारे पास दो फ्रैक्शन है. ओके, एक तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है. अब हमें बताना है इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उनमें से ग्रेटर कौन सा पार्ट होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मल्टीप्लाई 2/7 into 3/4. सो दिस विल गिव अस 6/28, and we can reduce it because we can cancel out 2 and 4, or we can just simply cancel out that 2 3s are 6, 2 14s are 28, so 3/14. Now let's multiply 3/5 into 5/8, this part. So 3 5s are 15 upon 5 8s are 40, or we can cancel out 5 from 5, or we can cancel out here 15. So 5 3s are 15 and 5 8s are 40, so 3/8. Okay, so these are simplest form. Now compare 3/14 and 3/8. So for comparing these two fractions, we must see that if these fractions are like fraction, so for like fraction the denominator should be same, but here the denominator are different. So first we will convert them in like fraction. LCM of 14 and 8. So 14 और 8 का LCM कितना होता है 56. So 14 को यहाँ पे 56 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई. 14 4s are 56, so 3/4 into 4 into 4, and here we have 3/8. So 8 को 56 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. So this will give us 12/56, and this will give us 7 3s are 21/56. Okay, now we have denominator same. These two fractions are like fraction, so we can compare numerator now. So 21 is greater than 12, so we can write here 12/56 is less than 21/56. That means these fractions were 3/14 and this is less than 3/8. That means which part is greater? The 3/5 of 5/8 is greater. Okay, so this is our answer. Now let's come to the question number 5. Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and last sapling. So सैली कोई गर्ल है जो अपने गार्डन में प्लांट्स लगाती है. ओके, सैपलिंग यानी कि छोटे से जो पौधे होते हैं उनको सैपलिंग बोलते हैं. सो 4 वो सैपलिंग अपने गार्डन में लगा रही है. लाइक 1 is here, 1 is here, 1 is here and 1 is here in a row. Okay, it is written here in a row. Okay, and the distance between two adjacent sapling. Adjacent का मतलब होता है दोनों अगल बगल. ओके, सो अगल बगल वाले के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3/4 मीटर. ओके, किन्हीं भी दो के बीच में, इन दोनों के बीच में 3/4 मीटर, इन दोनों के बीच में 3/4 and also 3/4. This is 3/4 meter and this is 3/4 meter. So every adjacent sapling are 3/4 meter apart from each other. Okay, now next we have find the distance between the first and last sapling. So if this is first and if this is fourth, that means last. So we have to find out the distance between these two saplings. Okay, let's suppose this is x. So we have to find out this distance. So what will we do? We can see here that if there is distance between two saplings is 3/4 meter, that means the distance between here to here is 3 times of 3/4. Okay, that means 3 times
3/4 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी. सो नंबर ऑफ सैपलिंग इन गार्डन. सो गार्डन में कितने नंबर ऑफ सैपलिंग है? 4. ओके. एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट sapling is 3/4 meter. So we have to find out the distance between first and last. So distance between first and last sapling is equals to 3 multiplied with 3/4 meter. So now as we were multiplying before, we can multiply this number easily. So 3 is a whole number and we have to multiply 3/4. So 3/1 we can write it and 3/4. So this is 3 into 3 is 9 and 1 into 4 is 4 meter. So this is our answer. So question number 6 is Lipika reads a book for 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? So एक कोई गर्ल है लिपिका, तो वो हर दिन किसी बुक को 3/4 आवर्स पढ़ती है. ओके. और वो पूरी बुक को पढ़ने के लिए 6 डेज का टाइम लेती है. ओके. सो हमें बताना है कि हाउ मैनी आवर्स इन ऑल. सो टोटल 6 डेज में उसने कितने आवर बुक को पढ़ने के लिए दिए हैं. ओके. सो एज वी नो टाइम गिवन बाय लिपिका टू रीड द बुक पर डे. सो पर डे का टाइम कितना है? 3/4 आवर्स. दैट मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो ये हो जाएगा 4 1 4 प्लस 3 दैट इज 7/4 आवर्स. नाउ अब हमें एक दिन का पता है. सो 6 डेज का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 1 डे के टाइम को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो टाइम गिवन बाय her to read the book in 6 days will become 6 into 1 day का टाइम. ओके. तो ये हमारे पास आ जाएगा. 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से बिकॉज इट इज़ न्यूमरेटर एंड 6 के डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं. सो 6 into 7 is 42 एंड 1 into 4 is 4. सो ये हमारे पास आ गया है 42/4 आवर्स. एंड अगर क्वेश्चन में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है सो हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना होगा. सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 10 2/4 आवर्स. दैट मीन्स 10 आवर्स एंड 2/4 आवर्स एक्स्ट्रा. ओके. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is a car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liter of petrol? So एक कोई कार है जो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है. So how much distance will it cover using 2 3/4 लीटर? तो अगर 1 लीटर में इतना जाती है तो 2 3/4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. ओके. So in 1 liter petrol car runs 16 kilometers. Okay. 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाता है. So in 2 3/4 liter petrol car runs. So 1 को 2 3/4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. So 16 into 2 3/4. अब हमारे पास ये वाला पोर्शन मिक्स फ्रैक्शन में. सो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. सो 16 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 4 into 2 दैट इज 8 प्लस 3 11/4. नाउ 16 को हम 16/1 लिख सकते हैं. सो यहाँ पर हम दो चीज़ कर सकते हैं. या तो हम 16 को 11 से मल्टीप्लाई करें और फिर 4 से डिवाइड करें, और या तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट 4 इज़ इन डिनोमिनेटर एंड 16 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन. सो 4 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 4 टाइम 16 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 4 into 11. सो 4 into 11 is 44 kilometers and this is our answer. So students, it was your exercise 2.3 from chapter fraction and decimal.
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. एंड रिमेनिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू this exercise you have to do by yourself by following same method as I am applying over the video, and you need to practice all the questions and note them in your notebook. So I'll see you with next exercise. Till then, keep practicing and take care.